lecture series on Napier, and today we're going to discuss a very important philosopher, Machiavelli. Niccolo Machiavelli was an Italian philosopher, and the name is very famous. Uska usage बहुत common है. So we're going to discuss some of the nuances of his philosophy. सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हम पहले ट्रेंड में डिस्कस करते हैं, his philosophy ideology is realism. His focus is on how to build state. His focus is on statecraft. उससे पहले इंडिया के अंदर चाणक्य की philosophy आती है, which is a very realist and pragmatic philosophy. इसी तरह चाइना, जापान और वहाँ पर भी ये वाली philosophy बड़ी common होती है कि वहाँ पर legal codes develop किए जाते हैं. रोम के अंदर सिसेरो डेवलप्स एंड एडवोकेट्स फॉर अ रिपब्लिकन रूल. इसके बाद हमारे पास थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी आएगी, लेविथन की. सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अंडर व्हिच निकोलो मैकियावेली ऑपरेटेड. मैकियावेली के 3 इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं, द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, द आर्ट ऑफ वॉर. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्ट ऑफ वॉर ऑफ सन त्जू, तो दोनों को आप कम ना करें. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क जो कि हमारे कोर्स से भी रिलेटेड है, दैट इज द प्रिंस. और ये हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे दैट इज फ्रॉम हिज बुक द प्रिंस. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप याद करें कि किताब किस की है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वो कब पब्लिश हुई ये भी आप देखें, तो आपकी एमसीक्यूज की तैयारी भी साथ साथ होगी. अगेन लेट्स डिस्कस द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अंडर व्हिच मैकियावेली ऑपरेटेड. Machiavelli was an Italian philosopher as discussed, but back in his time Italy was not one country as we know it today. Italy was divided in different fragmented city-states who were vying and competing for power of all of Italy. तो फ्लोरेंस की सेपरेट एक सिटी स्टेट थी, मिलान की सेपरेट थी, वेनिस की सेपरेट थी, नेपल्स की सेपरेट थी. These were all separate city states with different governments of their own, and they were vying for control over all of Italy. इनके अलावा, इन सिटी स्टेट्स के अलावा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे within Italy or in the larger region, they were also claiming control over Italy. So papacy, which is basically church, France, Spain and the Holy Roman Empire, all were trying to dominate Italy. तो बेसिकली एक एनार्की का समा था इटली में, और कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी कि जो इटली को यूनिफाई करके या इटली को ऑर्डर रिस्टोर कर सके. तो अगेन इन दैट एनार्की के कॉन्टेक्स्ट में मैकियावेली ने किताब लिखी जो कि बहुत ब्रूटल, बहुत कैलकुलेटेड, कोल्ड हार्टेड वायलेंस को यूज करके स्टेट में ऑर्डर लाने को जस्टिफाई करती है. बट कॉन्टेक्स्ट उसका यह है कि चूंकि एनार्की में ऑलरेडी इतना वायलेंस चल रहा था कि मैकियावेली सॉ एक सेंट्रल रूलर विद वेरी स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट रूल who will use violence and various other methods to bring order to the world. और ये कहा जाता है कि Lorenzo de Medici was the governor of Florence that time. So this book, The Prince, was written as both guide and to win favors from him. So, which is not surprising because authors in history used to write stuff to appease their political masters. तो अपनी The Prince किताब के अंदर वो जितना भी स्टेट क्राफ्ट एक्सप्लेन कर रहा है, बेसिकली इज एक्सप्लेनिंग हाउ अ स्टेट शुड बी गवर्न्ड इफेक्टिवली. एक जो रूलर है, अ वाइज प्रूडेंट रूलर हु ही कॉल्स द प्रिंस एज द टाइटल ऑफ द बुक सजेस्ट, हाउ दैट प्रिंस शुड कंस्ट्रक्ट स्टेट एंड हाउ ही शुड गवर्न दैट स्टेट, और उसको किस तरीके से डिफरेंट चीजों को लेकर चलना चाहिए. उसके अंदर सबसे पहले वो टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज, टाइप्स ऑफ टेरिटोरीज दैट डिफरेंट टेरिटोरीज दैट अ प्रिंस कैन होल्ड, उनको एक्सप्लेन करता है. वो कहता है कि एक होती है हेरिडेटरी प्रिंसिपैलिटी जो कि आप इनहेरिट करते हो, क्योंकि बाप के बाद बेटे की रूल है तो बेटे ने बाप से जो इनहेरिट की. कुछ होती है न्यू प्रिंसिपैलिटीज जो आप एक्वायर करते हो, विच कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड्स. एक आपने अपनी पावर से कॉन्केस्ट के जरिए हासिल की, बाय पावर ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के साथ अलायंस करके उसकी पावर से ली, बाय क्रिमिनल एक्ट्स, एक्सट्रीम क्रूअल्टी, बहुत ज्यादा वायलेंस और शदीद तशद्दुद के साथ हासिल की, या बाय विल ऑफ द पीपल के आपको किसी नई टेरिटरी में लोगों ने इनवाइट किया, लोग आपको पसंद करते थे एज अ रूलर, और एक सिविक प्रिंसिपैलिटी जिसको वो कहता है कि लोगों की विल से आप बने. देन देयर आर मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटीज. दीज आर द प्रिंसिपैलिटीज जो कि एनेक्स की जाती हैं विद इन द एग्जिस्टिंग टेरिटोरीज जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी. एंड देन देयर आर एक्लीसियास्टिकल प्रिंसिपैलिटीज जो कि चर्च की प्रिंसिपैलिटीज. एक्लीसियास्टिकल इज यूज्ड विद रिलेशन टू द चर्च. अब वो कहता है कि इनके अंदर जो हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटी है, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट टू गवर्न. इट इज easiest to govern because जो subjects हैं वो उस family के रूल से already accustomed हैं because they have been governed by that family for so long. So there's natural disposition
is to love the ruling family. The people, the subjects love the ruling family. तो hereditary principality is the best principality, बेहतरीन principality है जिसको आप जबरदस्त तरीके से govern कर सकते हो आसानी से, for a prince, for a good ruler. New and mixed principalities, अगर तो new और mixed principalities में, इन दोनों में अगर language और customs same है, जो आप नई जमीन टेरिटरी एक्वायर कर रहे हो, अगर उनकी लैंग्वेज और कस्टम्स प्रिंस जिस कस्टम्स और लैंग्वेज से एडहेयर करता है वही हैं, तो दे आर इजियर टू गवर्न. बट अगर उनका लैंग्वेज और कस्टम डिफरेंट है तो दे विल बी डिफिकल्ट टू गवर्न. उसमें फिर आपको होमोजेनिटी लानी पड़ेगी, आपको वायलेंस यूज करना पड़ेगा, कोएर्जन यूज करने का, विच मैकियावेली इज ऑल फॉर. इन सिविक प्रिंसिपैलिटीज, वो वाली जो लोगों की विल से बनी है, वहां पर आप क्रूअल्टी नहीं दिखा सकते हर वक्त, बिकॉज वो बनी ही लोगों की विल से, आपकी कोएर्जन से नहीं बनी, आपकी पावर और अथॉरिटी से नहीं बनी. अगर वो लोगों की मर्जी से बनी है तो फिर रूलर मस्ट रिटेन पब्लिक ट्रस्ट एट ऑल टाइम्स. टेरिटोरीज व्हिच आर acquired by one's own power are better than those dependent upon favors of other. One's own power वाली are better than those which are acquired by others' power, because वो आपके करिश्मे से बनी है. तो इसमें वो बताता है कि एग्जाम्पल भी देता है. So for instance, the territories which are acquired by the favors of others are like those which are acquired by Cesare Borgia, who was the ruler of Italy के अंदर. He was governing a city state, और ये भी was a contender of power in the Italian control over Italy, and he believed कि this model is not sustainable. और हिस्ट्री में मिसाल देता है कि those who acquire territories by their own power are more successful. So for instance, Cyrus the Great in the ancient Persian Empire, Romulus Roman Emperor, तो जिन्होंने अपनी बलबूते पे, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपने कैरिज्मे पे टेरिटोरीज एक्वायर की हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं. Second classification that he does is with regards to types of armies. So he says that there are 4 different kinds of armies for a prince. The first are the mercenaries. Mercenaries वो हैं जो कि hired soldiers होते हैं. तो you give them money and they fight for you. But they are dangerous and unreliable, because अगर आपके opponents उसको आपसे ज्यादा पैसे देंगे तो obviously they'll turn against you. Something that in Game of Thrones Bran does. So Bran gets more money from the other party. He says that I'm for a party who is going to give me more money. So that's how mercenaries work. Game of Thrones is an excellent exposition of this whole philosophy that Machiavelli explained. Then the second types are auxiliaries. Auxiliaries are those who are loaned by other rulers. So you have a good relation, alliance with another ruler, and you get those army as loaned by them. They are also dangerous and unreliable, because obviously as soon as their support is cut off, you no longer have this army, so it's not reliable. The third are the native troops, your own indigenous troops, and these are the most desirable kind. So जैसे Game of Thrones में, again there's the scene where Joffrey Baratheon, when he's not king as of yet, but he refers to the fact that Westeros needs an army of their own, indigenously raised. mercenaries की उन्हें जरूरत नहीं, because they're unreliable. They need to create a central army of their own. But he's shunned by his mother. But if you look at that idea, it was a very brilliant idea. Uski ye baat later on proves to be true as well, that had they have an army of their own, they would have been more successful. But anyways, this philosophy is self-explanatory why native troops are more desirable than mercenaries. The fourth are the mixed troops. They are the ones that in which agar native troops ki combination with any of the two, native troops combination of mercenaries or native troops combination of auxiliaries. So any combination of native troops with either of these two will result in mixed troops. Machiavelli thought that mixed troops are more desirable than mercenaries and auxiliaries, because कम कुछ portion of native troops उनमें होगा, but complete native troops are more desirable. So this is the most desirable, the second desirable, and then these two are the third most desirable kinds of armies. Now he talks about what the character of the ruler should be. मैकियावेली का प्रेमिस ये है कि इंसान पैशनेट है, इमोशनल है और रीजनेबल नहीं है, एज अपोज टू प्लेटो. हेंस मैकियावेली बिलीव्स कि चूंकि इंसान पैशन से गवर्न करता है, रीजन से नहीं चलता, इसलिए एक अच्छे रूलर को अपना ऑर्डर रिस्टोर रखने के लिए, आयरन फिस्ट से रूल करने के लिए लोगों के पैशन को मैन्यूवर करना चाहिए अपनी फेवर में, ताकि वो स्टेट को इफेक्टिवली गवर्न कर सके. एंड इन दैट ही attempts to diagnose human behavior and human passion. So he said that there are 4 passions that govern human behavior: love, hatred, fear, and contempt. Love and hatred are incompatible with each other,
इसी तरह fear and contempt are also incompatible with each other. तो कभी भी आपकी लव और हेट्रेड इकट्ठे किसी के लिए नहीं एग्जिस्ट कर सकती, fear and contempt इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकता. What are the compatible passions? Love and fear are compatible. Like जैसे आपको अपने पेरेंट्स का होता है. Hatred and fear are compatible. जिस तरह आपको किसी कोई बंदा बहुत बुरा लगता है, उसका हेट्रेड भी है, उससे डर भी लग सकता है आपको. Love and contempt are also compatible. Hatred and contempt are also compatible. All of these fears, combination of these passions are compatible. But these two, love and hatred and fear and contempt, are not compatible passions. अब इन 4 compatible passions में से कौन से passions की combination inspire करनी चाहिए रूलर को अपने सब्जेक्ट्स में? He says, और ये मैंने order of preference में ही रखा है, the most desirable is love and fear. If a ruler can inspire both love and fear, that's most desirable. क्योंकि लोग उसे मोहब्बत भी करेंगे, उसे ओवरथ्रो करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऑर्डर रहेगा, और उसे डरेंगे भी, उसके लॉज को भी इन्फोर्स करेंगे. सो रूलर विल बी लाइक अ पैटर्नलिस्टिक फिगर. जैसे मैंने आपको बताया कि आप पेरेंट्स से आपको मोहब्बत भी होती है और डर भी होता है, तो आप सबसे ज्यादा उनकी बात मानते हो. That's how a ruler will have a more paternalistic role and most effective governance होगी, क्योंकि आपने manipulate करना है. If you can manipulate using this combination to bring order to society, that's the best. But if a ruler cannot inspire love and fear for whatever reasons, then he should go for hatred and fear. Fear बहुत जरूरी है कि मैकियावेली की फिलॉसफी में कि लोग डरेंगे नहीं जब तक रूलर से, तब तक वो उसके ओबे नहीं करेंगे. जब तक वो लॉस ओबे नहीं करेंगे तो कमांड अथॉरिटी नहीं कर सकता रूलर, और वो सॉवरेनिटी इन्फोर्स नहीं कर सकता अपनी, और उसकी वजह से केओस रहेगा, जिस तरह का केओस मैकियावेली एक्सपीरियंस कर रहा था अपनी इटली के अंदर, जहां पे सारे लोग कर रहे थे. अगर कोई एक सेंट्रल बंदा हो जो फियर इंस्पायर कर सकता हो, तो ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती. द थर्ड कॉम्बिनेशन इज लव एंड कंटेम्प्ट, एंड द फोर्थ इज हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट. According to Machiavelli, contempt, any combination with contempt is to be avoided at all costs. क्योंकि जब contemptuous होते हैं लोग किसी के खिलाफ, तो फिर उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, और फिर उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है, सोसाइटी में एनार्की आती है. फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए आपको फियर टॉप प्रेफरेंसेस दोनों में मिलेगा, और बॉटम दोनों के अंदर आपको कंटेम्प्ट मिलेगा, विच इज टू बी अवॉइडेड. तो गोल क्या है? द गोल इज दैट द रूलर मस्ट एस्टैब्लिश हिज रिट एट ऑल कॉस्ट्स टू अवॉइड एनार्की, टू ब्रिंग एन ऑर्डर, सिक्योरिटी इनटू the society. Machiavelli's perspective on war is that between different states, it is inevitable. War can only be postponed. Because हमेशा इंट्रा स्टेट्स के आपस में अलाइन नहीं करेंगे अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए. द अदर स्टेट, क्योंकि मटीरियलिस्टिक है सारी स्टेट्स, एंड इट्स अ जीरो सम गेम. वन रूलर विल ऑलवेज वांट मोर टेरिटरी टू ऑक्यूपाई मोर पीपल. तो अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सूनर और लेटर you will have to fight another state, because if you postpone the war yourself, the other state is going to impose a war on you, and then you'll have to defend. So you should never postpone a war to your own determinant. You should strike. Obviously आपको हमेशा जंग भी नहीं शुरू कर देनी चाहिए according to Machiavelli कि आप हमेशा preemptively जंग शुरू कर दो. You should fight and attack when you can destroy enemy's advantage, when you're in a better position, when you have strength. And he believed that politics is all about getting and keeping power, and warfare is indispensable to it. Politics is all about ritualized warfare, कि आपने warfare की calculation करनी है कि when you should do, how you should do, and how you should protect your country. One of the very important concepts in Machiavelli's philosophy is the concept of virtue. Virtue is a technical concept. It's not like virtue in the modern sense as we use it. This can be loosely translated, because Italian में लिखा गया था ये originally, as leadership qualities. कि कौन सी leadership qualities ruler में होनी चाहिए. It's a particular kind of skill that a ruler must possess. इसका premise ये है कि ये हम एक morally incoherent world में रहते हैं, in which there is a sharp distinction between what one deserves and what one gets. तो अच्छे लोगों को, deserving लोगों को वो चीज नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. So nature is not naturally going to bring order in universe. That's what Machiavelli is saying. Anarchy इटली में इसलिए है because nature खुद आके ठीक नहीं करेगी इस anarchy को. Order restore करने के लिए कुछ skills, leadership qualities require हैं, जो कि किसी को खुद अपनी personal will के जरिए enforce करनी पड़ेंगी. कोई automatic कुछ नहीं होगा.
So virtue is the quality that enables to face the blows of misfortune and overcome with whatever means necessary. तो प्रिंस के अंदर, एक सक्सेसफुल प्रिंस के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए कि ये जो मिसफॉर्च्यून है, ये जो इनकोहेरेंट वर्ल्ड हमने इनहेरिट किया है, कि जिसकी वजह से एनार्की है या मसले हैं सोसाइटी में, उसको उसे whatever means necessary यूज करके उनको इन्फोर्स करना चाहिए. whatever means necessary, वो पीछे उसने जिस तरह कि आपने कैसे टेरिटरीज एक्वायर करनी है, वॉर किस तरह लड़नी है, आर्मीज कैसे डिजाइन करनी है, किस तरह आपने लोगों में पैशंस को मैनिपुलेट करना है, वो सारे मीन्स भी उसने बताए हुए हैं. सो अ प्रिंस नीड्स टू बी amoral. There should be no absolute moral standards to which he should adhere. According to circumstances, he should do whatever he pleases. So a ruler should lie if required. A ruler should use force, coercion, violence, but again determining on the situation. इसीलिए जब वो civic principality है तो वहां पर आप ज्यादा cruelty ना show करो, because आपके interest के खिलाफ जाती है. So the philosophy is that ends justify the means. It doesn't matter कि आपने means कौन से adopt किए. If you are achieving your goals, that's all that matters. तो जो मैकियावेली की philosophy in a nutshell, again जो हम चार्ट बनाते हैं हमेशा, वो ये है कि the well-being of the state is the responsibility of the ruler. The ruler's own morality is less important than the good of the state. The well-being of the state can only be achieved should be achieved by any means possible, including deception and intrigue. And a ruler should never use his morality to come in between the larger interest of the state. He will be judged on the basis of results rather than the means he's used. Hence, a prudent ruler cannot and must not honor his words. यानी उसे किसी moral values के साथ, standard के साथ adhere करने की जरूरत नहीं है. But he should make sure that there's an order in his country or in his empire. ये भी एक मैकियावेली की quotation है. Virtue brings ruin while vice brings security and prosperity. So you can see that how he's advocating for a very harsh, manipulative, deceptive. He's like a Littlefinger from Game of Thrones, कि आपने whatever means necessary to achieve your ends. इसकी लेगेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा लोगों को, रूलर्स को इस चीज़ ने इंस्पायर किया. या एकेडमिक्स कैन सी मैकियावेली की जो फिलोसॉफिकल थॉट है, देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस रूलर्स, हेनरी VIII of England, होली रोमन एम्परर्स, Oliver Cromwell, Charles V, Napoleon, all used these tactics that were used in this manual of having a successful statecraft by Machiavelli. The book was acknowledged as an inspiration for various writers, including Marxist figures and fascist dictators. So this is a very important legacy of Machiavelli. Machiavelli was also a product of Renaissance, because prior to Renaissance, religion पे बहुत emphasize किया जाता था, churches पे बहुत emphasize करती थी, but Renaissance का एक बहुत important feature secularism था. So you can see that Machiavelli is secular in his approach, because he's not adhering, he believes that state should adhere to no religious or moral standard, because this goes against this religious tradition जो कि उस time चल रहा था. He took a more objective and scientific approach to political history, rather than arguing that there is this larger natural force behind जो कि history को progress कर रही है. Machiavelli did not believe in this. तो इसीलिए उसकी एक cynical approach है जो कि बाद में Thomas Hobbes की political theory में translate करती है. तो they are very important relevance to international relations as well, because ये जो political realism है IR में जो आप पढ़ते हैं, वो भी Machiavelli की theory से निकलता है. इसकी critique बहुत ज़्यादा common है. Machiavellian behavior, we colloquially refer bad behavior, deceptive and manipulative behavior, commonly referred to as Machiavellian behavior. इसके अंदर critique की जाती है कि इस तरह के politicians, जैसे रिचर्ड निक्सन ने for instance use किया to cover अपने political opponents को manipulate करने की कोशिश की, then used hush money to cover up the investigation, and various other such examples are all examples of Machiavellian behavior. तो इसकी critique ये की जाती है कि it's very violent, it advocates a very autocratic, unjust state model. It is also very anti-democratic, because Machiavelli is all for using violence and using coercion and manipulation. So he's divorcing politics from morality. और इसके मुतालिक अल्लामा इकबाल ने कहा था that Machiavelli was a sharp agent of devil. So you can write that as well. So that's all for today on Machiavelli. In the next lecture we're